Hello students, we are going to study Geography class 10th chapter 1 Resources and Development. Today we will study the topic Soil in India. भारत में मृदा वर्गीकरण. On the basis of color, age, chemical composition, physical properties and soil farming factors, the soil in India can be classified into many parts. They are alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid and desert soil, forest and mountain soil. First is alluvial soil. Jarod mitti cover the maximum area in India in northern plains, river valleys in peninsular India and deltas of east coast. They are formed by alluvial deposited by Indus, Ganga, Brahmaputra river systems. For thousands of years, the main features of alluvial soil. जलोढ़ मिट्टी की मुख्य विशेषताएं. First, alluvial soil are young soil which transported and deposited by rivers. It consists of varying properties of sand, silt and clay. Almost all the crops grow in alluvial soil. These soil contain potash, lime and phosphorus acid. They are deficient in nitrogenous and organic content. According to age factor, it is divided into two parts, Khadar and Bhagar. The Khadar soil is new silt deposited by river. It is fine-grained, light-colored and high in fertility. Khadar is formed near the river bank. Second is Bhangar. It is old alluvial deposited by river. It is coarse-grained, dark-colored and lower in fertility. Bhangar is formed in area above flood plains. Now next topic is black soil, Kali mitti. This dark color soil is also called Rigur or the black cotton soil. It is formed by breaking and the decaying of basaltic rocks. It is formed in Deccan Trap regions of Maharashtra, MP, Gujarat, parts of Andhra Pradesh and Karnataka. The main features of black soil are: first, it is very fine or clayey in nature. It contains moisture for long time. It develops cracks in hot, dry weather. This soil is sticky when wet. It is rich in lime, magnesium, potash, but it is poor in phosphorus. This soil is very good for the growing of cotton and sugarcane. Now the major soil type. मृदा के आप सभी एरियो को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं. नाउ द एरिया यू कैन सी इन द प्रेजेंट मैप. The top layer of the forest and the mountain soil is covered by an area of Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and some area of Arunachal Pradesh.
The alluvial soil is covered in the northern plains, covering an area of Indus River and the Ganga River and the Brahmaputra River. It is very large area which cover Ganga, Brahmaputra and the Indus River's northern plains. Then the arid soil. It is covered the western Rajasthan. Then we can see in the map the black soil area covering some major part of western Maharashtra, Madhya Pradesh, some area of Gujarat and some area of Karnataka. Then we can see the red and the yellow soil. It is covering some part of Odisha, Chhattisgarh, Telangana and the some portion of western Ghat. Then you can see the laterite soil. Laterite soil is covering an area of Karnataka, Kerala, eastern Odisha and some area of Andhra Pradesh. I hope you have understood well this map. And if you have time, please draw a map of India and fill the following major soil type. Then we can continue with the red and yellow soil. Lal or Pili Mitti. These soil are found in area of low rainfall in the eastern and southern parts. They are found in Odisha, Chhattisgarh, Telangana and the part of western Ghats. Reddish color of soil is due to presence of iron. It means the red soil is red in color due to presence of iron. Now the main features of red soil. These soil lack in nitrogenous, organic and the phosphoric content. They are less fertile soil. They can plod with the help of fertilizer. Next topic is laterite soil. These soil are found in area of high temperature and heavy rainfall regions. Laterite soil are found due to the process of leaching. लीचिंग हिंदी में उसको निछावन बोलते हैं. In high rainfall region, it causes washing away of soluble nutrients from the upper lower layer of soil. It means when there is heavy rainfall, the fertile minerals, it drain into the lower section of the soil from the top soil. Now it is found in Western Ghats, region of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Eastern Ghat of Odisha and Andhra Pradesh. Now the main features of laterite soil. Laterite soil, though are not suitable for cultivation, but sufficient fertilizer and manure can help. Second, it is found in Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, the best use for growing tea and coffee. Next is arid and mountain soil. Arid and desert soil, Marusthali Mrida. It is found in hot and dry region of western Rajasthan. Its colors ranges from red to brown. They are sandy. ये soil जो है वो रेतीली होती है and they have high concentration of salt due to high rate of evaporation. Arid soil lack humus due to lack of vegetation.
Lower layer of arid soil have a layer of conker or calcium content which prevent the seepage of water. With the help of irrigation, arid soil can be cultivated. हम इरिगेशन के या सिंचाई की सहायता से इस मरुस्थलीय मृदा को उपजाऊ बना सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल. वन एवं पहाड़ी मृदा. दे आर मोस्टली फाउंड इन हिमालय बेल्ट, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. नाउ द मेन फीचर्स ऑफ दिस सॉइल. माउंटेन सॉइल on slopes are coarse and gravelly in nature. In valleys, the soil are loamy and silty. These soil are more fertile and valley than the upland. Next topic is soil erosion and the conservation. मृदा अपरदन और संरक्षण. Removal of fine layer of exposed soil by rain, running water and wind is called soil erosion. जैसे कि मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है. Causes of soil erosion. Cutting of forest and deforestation for agriculture, industries and the settlement. जब हम जंगलों को काटते हैं किसी भी काम के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, जैसे खेती करने के लिए और कोई भी कारखानों को बनाने के लिए, और साथ में यदि हम सेटलमेंट या मकानों को, घरों को बनाने के लिए हम जब पेड़ों को काटते हैं तो ये स्थिति आती है मृदा की. और इसको जब हम इसको धीरे धीरे इरोड करते चले जाते हैं. प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बाय ट्राइबल्स. जब जंगली लोगों के द्वारा जब हम धीरे धीरे स्थानांतरित करते हैं, खेती को काटते चले जाते हैं या हम एक जगह से दूसरी जगह उस खेतों को शिफ्ट करते चले जाते हैं. जैसे हमने पहले सुना होगा झूमिंग का नाम. ये झूम खेती जो होती है वो ट्राइबल पीपल, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो जंगलों को एक अपने पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, उसमें फिर अपने कुछ अनाजों को बोते हैं. दे crop some crops and then they go on cutting the trees for the purpose of cultivation. Next is overgrazing of pasture land by cattle. भूमि की चराई, ओवरग्रेजिंग और साथ में चरागाह के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड द डिगिंग एक्टिविटीज़ ऑफ मैन. निर्माण का काम, खुदाई का काम की गतिविधियों के ही आधार पे व्यक्ति इन चीज़ों को इरोजन करता चला जाता है, उसका अपरदन करता चला जाता है. और साथ में एंड द एंड फॉल्टी फार्मिंग टेक्निक, दोषपूर्ण कृषि तकनीक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन. मृदा अपरदन के प्रकार. ये दो तरह के होते हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, गली इरोजन एंड द शीट इरोजन. गली इरोजन मीन्स गली का कटाव और शीट इरोजन मीन्स चादर की कटाव. नेक्स्ट, गली इरोजन. Gully erosion is caused by rainfall when a stream of water cut through fine soil making furrows or the deep channels. जब बरसात के समय में जब तेज़ बारिश होती है तो मिट्टी
उस बारिश के फोर्स से, उसके ताकत से वो मिट्टी, ऊपर वाली मिट्टी जो पहली परत होती है वो धीरे धीरे बह जाती है, कट जाती है। गली इरोजन रेंडर्स लैंड यूजलेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और ये मिट्टी को अनुपजाऊ बना देती है। इट इज़ कॉल्ड बैडलैंड्स, उत्खाद। बैडलैंड्स को उत्खाद भूमि बोलेंगे। दे आर फाउंड इन चंबल वैलीज, ये चंबल बेसन में इन उत्तर प्रदेश एंड द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में इट इज़ फाउंड। नेक्स्ट इज शीट इरोजन। द होल शीट ऑफ soil is eroded by the running water or by the fast blowing of winds. So पूरी पवन से, हवा से पूरी मृदा की, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो पूरी जो हवा है उसको उड़ा ले जाती है। तो इसी तरीके से ये पूरी जो ज़मीन है वो अनुपजाऊ हो जाती है।